Amna and Rishita, am I audible? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. What? By the way, Amna, how was your exam today? Ji, Amna, Yes, sir. how was your exam today? You had chemistry today, right? Yes, sir. It was good. It was good. Any questions that you want to discuss? No, sir. I will send you the Okay. question paper. Please send me the question paper. भूल मत जाइएगा, okay? Yes, sir. ठीक है. So in the last lecture हम लोगों ने किया था कुछ, and then I said that I will discuss the pH of mixtures, है ना? अगर आप लोग को याद हो, I was supposed to discuss the pH of mixtures. Just NCERT class 11 and first book, last chapter. Now, so these are three questions in the NCERT, okay, in which you have to calculate the pH of the mixtures. So for the calculation of the pH of mixtures, you need to do is I will be discussing, let us suppose I will discuss this A1, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा that what is happening here. Now, before discussing these questions, I would just like to remind you a few things. Molarity, it is equal to number of moles of solute divided by the volume. And molarity is equal to N by V. And from here, we can say that the number of moles will be equal to the molarity into volume. Okay. This is important formula that you have to remember, an important relationship. That means if you have the molarity and the volume, you can get the number of moles. ठीक है. अब इसमें सॉल्व कैसे करना रहता है, ध्यान दीजिएगा जरा. pH of mixtures में, है ना? So if I take the first question, A part, here you will first of all calculate the number of H plus and the OH negative per molecule of acid and base. ठीक है. Number of first step क्या है? Let me write the question here. 10 ml of 0.2 molar calcium hydroxide plus 25 ml of 0.1 molar HCl. ठीक है. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें. सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव पर मॉलिक्यूल. H plus and OH negative is better. OH negative per molecule of acid and base. ठीक है. So what is the acid here, guys? Tell me. In this mixture, what is the acid? जल्दी बताएं. What is the acid here? HCl. HCl. Very good. So HCl, it will dissociate and it will give H positive and OH negative. ये आपको लिखने आना चाहिए. This is what is expected from you guys, that you should know. So from here I can say, if I have 1 mole of HCl, I will get 1 mole of H positive. That means the concentration of H positive will be equal to whatever be the concentration of HCl. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. What about the base? What is the base here? CaOH twice. CaOH whole twice. So when it will dissociate into calcium 2 positive, right? And it will give 2 OH negative, है ना? समझ में आ रही है? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. That means if I have 1 mole of calcium hydroxide, I will get twice that much OH negative. तो जो concentration of OH negative होगा, that will be 2 times the concentration of calcium hydroxide.
Got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा, एंड आई होप दैट कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पे 2OH हो रहा है, यहाँ पे 1OH है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ OH जो है ना, दैट इज इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप देखना है, 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये जब 1 है तो ये 2 है ना। सो जब आपके पास OH1 होगा, दैट मीन्स whatever be the amount of calcium hydroxide, आपको twice that much OH negative मिलेगा। ठीक है, चलिए, so this is what we have found, that concentration of OH negative is twice that of concentration of calcium hydroxide and concentration of H positive is twice that of HCl। अब इसके बाद आपको जो क्या करना, second thing that you have to determine is the number of moles of H positive and OH negative। ठीक है, number of moles of H positive and OH negative, and here we will use this formula that molarity is equal to number of moles by volume. Molarity, it is equal to number of moles by volume, therefore we can say the number of moles will be equal to molarity into volume। Now for the concentration, for what, the number of moles of H positive, it is equal to molarity of H positive or the concentration of H positive multiplied by the volume। So what is the concentration of H positive? 0.1 molar, 0.1 molar, capital M है ना, multiplied by what is the volume, 25 ml। Yes. ठीक है, so this will be equal to 2.5 millimoles, क्योंकि मिलीलीटर है तो मिलीमोल्स होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। सिमिलरली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव will be equal to the concentration of OH negative multiplied by the volume। So concentration of OH negative, it is what, twice the concentration of calcium hydroxide, कितना है, 0.2 multiplied by 10। So this will be equal to how much, 4 ना, हाँ, 4 millimoles। Does this make sense till here? Yes or no? Please tell me। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? Calculate difference between number of moles of H plus and number of moles of OH negative। ठीक है, सो द डिफरेंस जो होगा ना, हम इसको सिर्फ डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं, एंड अब इसमें आपको ये देखना है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। 2.5 और 4 में कितना का डिफरेंस है, 1.5 मिलीमोल्स का, राइट? मेक सेंस? Yes, sir. तो आई विल से दैट, प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आई हैव 2.5 मिलीमोल्स ऑफ H पॉजिटिव एंड 4 मिलीमोल्स ऑफ OH नेगेटिव। So when I have H positive and OH negative, both of these are going to combine. And when they are going to combine, 2.5 millimoles complete of H positive will be combined, और 4 में से 2.5 millimoles of OH negative will be combined. So OH negative will be remaining, and that will be remaining 1.5 millimoles of OH negative is remaining in the solution। Means make sense? Yes or no? जो भी आपने H positive डाला है, that is neutralized by the OH negative because OH negative ज्यादा है। Make sense till here? Yes or no? Please tell me। Yes, sir. So now we have the amount of OH negative inside the solution। आपके पास क्या है, the amount, that means number of moles है आपके पास। अब आपको क्या करना है, calculate the fourth step is calculate concentration of OH negative या H positive, जो भी remaining in solution, then उसका pH निकल जाएगा, then from there you can calculate the pH। ठीक है, अब ध्यान रखिए, so for we need to calculate the concentration। तो concentration क्या होती है, molarity is equal to number of moles divided by volume। तो number of moles तो हमारे पास है कितना, that is 1.5 millimoles divided by what is the volume that we are having of the solution, but है ना, हमारे पास जो मिक्सचर है ना उसका, तो मिक्सचर में हमारे पास क्या होगा, 10 ml calcium hydroxide, 25 ml HCl, that means we have total of 35 ml।
मेक सेंस टिल हियर? 35 ml, है ना? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, मिली इज व्हाट? मिली इज 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे भी मिलीलीटर, दैट इज 10 टू द पावर -3. सो आई कैन कैंसिल मिली एंड मिली, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? सीधा लिख देंगे आप 15/350 टाइप से. 15/350. This is the concentration of OH negative. This was the remaining concentration of what? OH negative. Makes sense, yes or no? Yes, sir. ठीक है. सो अब यू वांट टू, सो थोड़ा सा कम कर लें क्या? 15 टूजा, then we will be remaining with how much? I think it cannot be 150. नहीं, पूरा पूरा हो जाएगा 300. उसके बाद फिर 50 बचेगा. आई डोंट थिंक इट विल बी कंप्लीटली, पूरा नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द पीओएच माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. सही है. log of concentration of OH negative. This will be equal to minus log of 15/350. This will be equal to minus log of 15 minus log of 350. ठीक है. अब ये आपको निकालना पड़ेगा log 15 और log 350 के लिए. 350 के लिए तो 35 इंटू 10 कर दिया जाएगा. 35 इंटू 10 विल बी बेटर ना. तो log 15 हो जाएगा आपके पास क्या? log 15 विल बी log 3 प्लस log 5. ठीक है. माइनस log 350 कितना होगा? log 35 विल बी log 7 प्लस log 5 प्लस log 10. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. 7 5 is 35, 35 10 सा. So from here we can just plug in the values. माइनस हो गया. log 3 कितना हो जाएगा? log 3 is 0.48 plus log 5 is 0.7 minus log 7 is 0.84. Then again minus log 5 is how much? 0.7 and minus 1. So 0.7 और 0.7 तो यहीं पे कैंसिल हो गया. 0.48 and this is can you calculate this? कितना आ रहा है? Minus 1.36. Basics. So POH will be equal to 1.36, है ना? तो pH कितना हो जाएगा? pH will be equal to 14 minus 1.36, which will be equal to how much? 12.64. Correct? Yes, sir. ठीक है. तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है. Do you want me to scroll up? हाँ जी.
Let me know once you're done, guys. Let me know once you're done. Rishita, waiting for you. Okay. Moving on, next topic that we have to study is the ionization of acids and base. ठीक है, बाकी ये दोनों सवाल आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है. Both of these questions, as you can see, यहाँ पे H2SO4 है. So each H2SO4 is going to give you 2 moles of H positive. और यहाँ पे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 2 आपके 2OH नेगेटिव मिलेगा, ठीक है. अच्छा, एक बार जरा सा इसको ना थोड़ा सा ऐसे ही देख के बताइए क्या आंसर होना चाहिए. Look at this B question. 10 ml of 0.1 molar H2SO4, 10 ml of 0.1 molar calcium hydroxide. ठीक है, तो you can see, sorry, Will it be neutral? yes, correct, that is correct. It will be neutral, है ना. अच्छा, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे बस हमको एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो बता दीजिए. सी वाले केस में 10 ml of 0.1 molar H2SO4, 10 molar of 0.1 molar KOH. एसिडिक और बेसिक, देखिए इतना तो आपको समझ में आ रहा है. The amount, the volume of acid we are adding, the volume of base we are adding, it is not going to matter because both of them are same. The concentration of acid we are adding and the concentration of base we are adding, that is not going to matter because both of them are same. Now the only thing that will matter is the number of H positive and OH negative given by per molecule of acid and base. From H2SO4, how many H plus we will get from one molecule of H2SO4? How many H plus ions will we get? Tell me. 2. 2. और KOH से कितना बेस मिलेगा? 1. 1. So obviously 2 moles of H2SO4, so it is going to be acidic. तो pH जो भी होगा, we don't know that pH, but the pH will be less than 7. Make sense? Yes, sir. ठीक है, चलिए moving on. Write the next heading: ionization of acids and base. So here we will be discussing for acids, and parallelly we will be talking about base also. ठीक है. Now in acids, please see, आपके पास होगा Ha, it will dissociate into H positive and A negative. सही, एसिड में H positive निकलेगा and we will be getting A negative. So जो आपके पास dissociation constant होगा, this is equilibrium constant, and because of it is of acid और acid dissociate हो रहा है यहाँ पे, तो we call it dissociation constant of acid. ठीक है, it will be equal to the concentration of the product
upon the concentration of reactant. ठीक है, this is the Ka we are having, H positive into A negative divided by Ha. Now obviously if the concentration of H positive is very large, then the value of Ka will also be very large. The concentration of H positive will be large only for, tell me what, strong acid zyada H plus dega ya weak acid? Who will give more H plus, strong or weak? Strong. Strong acids, right? So strong acids will give high amount of H positive, and because of that, since numerator में H positive है, तो Ka will be also higher. So from here we can say that strong acids have higher Ka, have higher K. ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा. वीक एसिड्स के लिए वी डिफाइन अ टर्म दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. क्या बोलते हैं एक टर्म को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, वी कैन टॉक अबाउट बेस आल्सो. कितना तक हम लोग बेस के बारे में सेम चीज लिख सकते हैं ना. बेस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जनरल बेस इज डिफाइंड एज BOH. इट विल गिव B positive and OH negative. The dissociation constant of base is given as Kb, which is equal to the concentration of B positive multiplied by the concentration of OH negative divided by the concentration of the base BOH. And we can write strong base have higher Kb. And similar to Kb, there is also one more term that is known as pKb. ठीक है, pKb क्या होता है? pKb and pKa, it is equal to minus log of Ka. So from here we can write, since जब Ka बड़ा होगा तो नेगेटिव वाला टर्म छोटा हो जाएगा. So we can write strong acids have smaller pKa. और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? pKb is equal to minus log of Kb. And we can write strong bases have smaller pKb. ठीक है, pKb स्मॉल होगा इसका. ठीक है, दिस इज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस का डिसोसिएशन कांस्टेंट. नाउ फॉर वीकर एसिड्स एंड बेसिस देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सिंस weak acids and base dissociate partially, dissociates partially, hence they have degree of dissociation. Degree of dissociation क्या होता है? It is defined as alpha. क्या होता है alpha? See, there is certain amount of molecules of acid or base we are going to take, और उसमें से कुछ are going to dissociate. ठीक है, so we will write total number of electrolyte total number of total number of ऐसे लिख लीजिए molecules of electrolyte, molecules of electrolyte. ठीक है, so we have taken a certain amount of electrolyte. For example 100 molecules हमने लिया है, उसमें से 50 are getting dissociated. And तो numerator में क्या होगा? How many molecules are getting dissociated or getting ionized? So we'll write number of molecules which
आयोनाइज। ठीक है, तो अल्फा के लिए थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे बस, है ना, ध्यान दीजिएगा जरा। लेट अस सपोज आई एम टेकिंग सम एसिड, ये समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ठीक है, अब एक बात समझिए जरा। आई एम सेइंग दैट अल्फा ऑफ HA इट इज इक्वल टू 0.1 एंड इट इज इक्वल टू 1/10। मेक सेंस, yes or no? ये आप लोगों को दिया रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने एक वैल्यू ले लिया है, उस वैल्यू से क्या पता चल सकता है आपको वो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। दैट मीन्स इफ आई टेक 10 molecules of HA, then I will get 1 molecule of H positive and 1 molecule of A negative. Make sense? सही है, बोलिए गाइस। आमना, Yes. ऋषिता, खदीज। ठीक है, अच्छा, what will happen if I take 20 molecules of HA? Then how many H positive I will get? 2. 2. And how much A negative? 2. अच्छा, if I take 30, then I will get 3 and 3. Make sense? Yes, sir. अगर हम ध्यान से देखें जरा, so I can say that this value we are getting, it is equal to the amount of HA we are taking, 10, into the degree of dissociation, that is 0.1. सही है ना? And this value we are getting, it is because the 20 amount of acid we took multiplied by the degree of dissociation. Make sense? Yes, sir. है ना? And उसी तरह से this is 30 into 0.1. So in general we can say, if I have if I have taken X amount of acid, then the H plus we will be getting will be equal to X into the alpha. Correct है? Make sense, yes or no, basically? ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। Let me just erase these part. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दोनों के लिए ही है, एसिड्स और बेस दोनों के लिए। ठीक है ना? सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसिस वंस अगेन। ठीक है, फिर से आ गया है एसिड्स एंड बेस। अब ध्यान दीजिए, एसिड अगर फॉर वीक एसिड्स है, ठीक है, नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर वीक एसिड्स। अब यहाँ पे किसके लिए बात होगी? फॉर वीक बेस। वीक एसिड में वी विल टेक HA, this will dissociate into H positive and A negative. So the amount of acids we are taking, we denote it by C. किसे डिनोट करते हैं हम लोग? C से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इनिशियली यहाँ पे 0 और 0 होगा, दिस इज द इनिशियल। जो चेंज आएगा, the amount of HA the amount of HA which is getting dissociated will be equal to minus C into the dissociation constant. जितना आपने लिया है multiplied by the degree of dissociation will give you how much of HA is getting ionized, and जितना HA ionize होगा उतना H positive आपको मिलेगा, that is you will get C alpha here, and here also you will be getting C alpha. In equilibrium what will happen? We will have C minus C alpha, here you will have C alpha, and here you will have C alpha. Now these are the equilibrium concentration for which we have to define the Ka of the acid. This will be equal to how much? The concentration of H positive at equilibrium multiplied by the concentration of A negative at equilibrium divided by the concentration of HA at equilibrium. So concentration of H positive is equal to C alpha. The concentration of A negative is also equal to C alpha divided by C minus C alpha. Now from here you can write C square alpha square divided by C minus C alpha. I can take a C common and I will write 1 minus alpha. Now from here we can see that C and C is common, so I will cancel one C and I will get the Ka is equal to C alpha square
upon 1 minus alpha. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Can you similarly write for the weak base also? Yes, sir. चलिए ठीक है. देखिए, for weak base what we will be writing is BOH in equilibrium with B positive plus OH negative. Initially we'll be having C concentration. These will be 0 and 0. The change we'll be having will be minus C alpha. This will be plus C alpha and this will be plus C alpha. The equilibrium we'll be having is C minus C alpha. Here also C alpha and here is C alpha. So similar calculations will be done, and for base we will just write the Kb is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. Does this make sense? No? Till here, yes or no? Yes, sir. ठीक है. Now you will write a note. Are you done for weak bases, guys? लिखिए आपने वीक बेस के लिए. जी नहीं लिखा है किसी. Raise your hand once you're done. Raise your hands once you're done. Just waiting for you, Rishita. नोट लिखिएगा यहाँ पे. इफ जब K मिल रहा है ना, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स और बेस. ठीक है. इफ Ka और Kb, Ka हो चाहे Kb हो, is less than 10 to the power minus 3. ठीक है. किससे कम हो? If it is less than 10 to the power minus 3, then ignore alpha in 1 minus alpha. ठीक है. तो आपको क्या करना है? इग्नोर अल्फा इन 1 माइनस अल्फा. और when alpha is very 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 smaller than 1, then एक काम करते हैं, देन से यहां पे इसको लिख देते हैं.
एक सेकंड. These are the two conditions जिसमें आपको क्या करना है, you have to ignore 1 minus alpha in the alpha. ठीक है, अल्फा को इग्नोर करना कहाँ पे, 1 माइनस अल्फा में. तो आपके पास जो k था दैट वाज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, k विल बी इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. ठीक है, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. तो फिर आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 हो गया ना. अब आपके पास क्या है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर अल्फा, अल्फा अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए, k दिया हुआ है आपको एंड k इज लेस देन 10 टू द पावर माइनस 3, तो व्हाट यू विल डू, यू विल इग्नोर द अल्फा इन 1 माइनस अल्फा, है ना. अब अगर आपको यहां से अल्फा निकालना है तो अल्फा कैन बी रिटन एज द डिसोसिएशन कांस्टेंट k, चाहे वो एसिड हो बाय चाहे बेस हो, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन c एंड रूट. मेक सेंस, yes or no, please tell me, does this make sense, yes or no? Yes, sir. अब दूसरी चीज, आपसे अगर कंसंट्रेशन पूछा जाए, ठीक है, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा, k अपॉन, चलिए इतना लिखिए आप लोग, आगे देखते हैं. हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना चाहेंगे. ठीक है, here guys, we have seen that the for weak acids and base, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हो एसिड के केस में, और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव हो एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, तो इक्विलिब्रियम में H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा होती है, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, इफ यू आर टेकिंग अ बेस इट इज गोइंग टू बी C अल्फा, है ना. ये क्या होता है, इट इज C अल्फा इज इक्वल टू C अल्फा. ठीक है, और हमारे पास एक इक्वेशन है वीक एसिड्स में, जब अल्फा इज व्हाट, व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1. ठीक है, 1 से बहुत छोटा होगा जब. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यू नो दैट k इट इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर. व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई c इन बोथ द साइड्स. तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट c और अदर k into c, and here you will get c square into c square alpha square. ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, के सी is equal to c alpha whole square, and c alpha will be equal to under root k into c. ठीक है, now what is c alpha, c alpha is the concentration of H plus or OH negative. So concentration of H positive or concentration of OH negative, please remember at equilibrium, है ना, at equilibrium can we get, we can get this by multiplying the dissociation constant Ka और Kb जो भी हो into C. ठीक है, so this is the formula that we can directly use. Does this make sense, इसनो यहां से यहां तक देख लीजिए एक बार. Yes, sir. Please copy this down.
Raise your hand once you're done. Please raise your hand if you're done till here. Waiting for Amna and Rishita. ठीक है, हम देखिए, we are going to do numericals, है ना? तो numericals में we have seen two types of numericals. एक था calculation of pH of strong acids and strong bases, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया. ठीक है. सेकेंड इज pH में आपके पास pH दिया हुआ है और कंसंट्रेशन आपको निकालना है, या कंसंट्रेशन दिया हुआ pH निकालना, उस तरह के सवाल. कैलकुलेशन ऑफ pH ऑफ मिक्सचर्स, ये भी हमने कर लिया. ठीक है. अब जो तीसरा टाइप का ये हम लोगों ने आज अभी किया ना, जस्ट स्टार्टिंग क्लास में. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल बी सीइंग इज रिलेटेड टू Ka, Kb या फिर अल्फा. ठीक है. रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और Ka एंड Kb. ठीक है. Ka एंड Kb से रिलेटेड होगा. जैसे कि एक सवाल, दिस इज क्वाइट इजी, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको आंसर्स. आपको दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH वी हैव टेकन and it is equal to 0.1 molar, and the dissociation constant of NH4OH is 1.8 into 10 to the power -5. ठीक है. और बोला हुआ है कैलकुलेट pH ऑफ सोल्यूशन. कैलकुलेट द pH ऑफ सोल्यूशन. देखिए बहुत ही आसान है. सी, Kb is what? It is less than 10 to the power -3. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. So we can directly use the formula. Concentration of OH negative will be equal to root over K multiplied by the concentration of base that we have. So K under root आपने लिया. K कितना है यहाँ पे? It is 1.8 into 10 to the power -5 multiplied by C is equal to 0.1. C कितना है आपके पास? 0.1 है. ठीक है. So अब यहाँ पे देखिए जरा, 1.8 into 10 to the power -6 हो जाएगा. मेक सेंस? yes or no? Please tell me. सही है. 0.1 है ना? ठीक है. अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए. सी, I want to remove this decimal point, but if I remove this decimal point, the power of 10 will be odd. And if it is odd, then I cannot remove the root directly from like above 10. I want the powers of 10 to be even so that I can easily remove the 10 from under root, because I will just half it. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? I will write under root of, instead of writing 18, I will write 180 multiplied by 10 to the power -8. Because we are shifting 2 decimal points, यहाँ पे 2 digits बढ़ जाएंगे, -8 हो जाएगा. And now this can be written as 10 to the power -8. I can remove it from the under root, and I will be having 180 inside the under root multiplied by 10 to the power -4. Because under root is just power 1/2. Makes sense till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Now tell me, what is there any root which is nearby 180? 12 is how much? 12 is 144. Or है ना? 13 is 169. 13 is 169. Yeah. 169 and 14 194, I think, na? 196.
196. So it is somewhere in the middle, है ना? 180, but it is more near to the 13 part, right? It is more near to 13, है ना? ठीक है. So this will be equal to 13.4 कर सकते हैं आप, 13.43 के करीब कुछ होगा, into 10 to the power -4. (180 plus 169) into 2y. देखिए, एक ना थोड़ा शॉर्टकट टाइप का होता है, लाइक इफ यू हैव वेरी लार्ज नंबर और उसका रूट निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं. सो जस्ट यहाँ पे आप एक चीज, हैव आई टोल्ड यू गाइस अबाउट दिस फॉर्मूला फॉर रूट? No, sir. ठीक है, देखिए, y इज इक्वल टू नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिफोर x. ठीक है, तो आपके पास यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट, आपको x का रूट निकालना है. सो द फॉर्मूला इज x प्लस y अपॉन 2 रूट y. व्हाट इज y? y इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जस्ट बिफोर x. तो हमारे पास क्या था? वी हैव टू कैलकुलेट द रूट ऑफ 180. सो दिस विल बी इक्वल टू 180. द नियरेस्ट रूट बिफोर 180 इज इक्वल टू हाउ मच? 169 डिवाइड बाई हाउ मच? डिवाइड बाई 169, 2 into 13. ठीक है, सो 180 प्लस 169 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 18, 18 और 16 कितना होगा? 200, 300, 330, 349, 349 डिवाइड बाई 26. ठीक है, सो व्हेन यू डिवाइड दिस तो आपको अप्रोक्सीमेटली 13.4 ही आंसर आएगा. डिवाइड करके देखिए जरा, 349 बाई 26. ट्वेंटी सिक्स अपॉन 350 भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा कहीं नहीं आएगा. आ रहा है रिश्ता? Yes, sir. 13.4. And let us also see what is the root of 180. 180 का root is 13.14416. ठीक है, 416 and 349 divided by 13.42. ठीक है, चलिए. सो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप लोग को बाद में काम आएगा. डन राइटिंग दिस? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिए. नेक्स्ट सवाल है आपके पास. Let's suppose they have given the concentration of HCN. This is an acid as 0.2 molars. And अच्छा, ये यहाँ पे क्या निकला भाई? हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकला ना. कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के बाद pH निकालना है.
हो जाएगा ना पीएच। इसके बाद पीओएच निकाल लीजिएगा, माइनस लॉग ऑफ 13.4 इंटू 10⁻⁻4 से। once you get the pH pOH, आप pH निकाल लीजिएगा, pH will be equal to 14 minus pOH। ठीक है, ये हो जाएगा ना। once you have got the concentration then you can calculate, right? ये सुनो हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, ये आगे आपको मतलब इतना इसके बाद आ जाना चाहिए आपको। समझिए क्या करना है। HCN is 0.2 molar and they have given its Ka, dissociation constant of the acid is 4.9 into 10⁻⁻10। ठीक है, so from here we can concentration of H plus हम लोग सिर्फ निकालेंगे, not the pH। ठीक है, pH आप लोगों ने सीख लिया, वो pH बाद में निकालिएगा आप लोग। We can directly say that the concentration of H positive will be equal to under root Kc, because the value of K is less than 10⁻⁻3। So I will write this as K is 4.9 into 10⁻⁻10 into 0.2. So we can write this as 4.9 को भी इधर भेज दीजिए और 0.2 को भी इधर भेज दीजिए ना, तो 49 into 10⁻⁻12 into 2। So 49 can be removed as 7 into 10⁻⁻6 into √2। Correct, guys? Listen to this for me. And from here I can say √2 are approximately 1.414. So 7 into 1.4 into 10⁻⁻6। ठीक है, तो 7 4s are 28, 7 1s are 7, 7 2s are 9, 9.8 into 10⁻⁻6 is the concentration of H positive। Please copy this down। Now, once you have got the concentration of H positive, we can calculate the pH also from here। So these are देखिए, you need to identify the problems है ना। यहाँ पे like what formula you have to use, it really depends on the information that you have been provided। If Ka, generally Ka will be less than 10⁻⁻3 if when we are talking about the weak acids and bases। ठीक है, waiting for Khadija and Rishita। Khadija, let me know if you are not done। After this, we will write a different type of questions now। ठीक है, इस तरह के सवाल होपफुली आप लोग अब कर लेंगे। प्लीज राइट आंसर क्वेश्चन। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन of 0.2 molar HCN solution with Ka is equal to 4.9 into 10⁻⁻10। ठीक है, सो वी हैव द डेटा इज द सेम, बट यहाँ पे क्या नहीं बोला हुआ, परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी कि पर 100 मॉलिक्यूल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिसोसिएटेड, ये निकालना। दैट इज बेसिकली व्हाट इट इज, बेसिकली अल्फा ओनली। सो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट, सिंस K is what, K की वैल्यू आपको दिख रही है, it is less than 10⁻⁻3 है ना। so you'll write as Ka is less than 10⁻⁻3। we can use the formula, what formula we can use,
Ka is equal to C alpha square, and alpha will be equal to root over K upon C. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. So one of the very Yes. important skill is to identify what formula to G. Any question? No, sir. Okay. So Ka is how much? 4.9 into 10 to the power minus 10 divided by 0.2. So I can write this as 0.2 come 2 by 10 लिखेंगे, and then that 10 will go above and it will become 49 into 10 to the power minus 10 divided by 2 under root, है ना? So 49 को बाहर निकाल सकते हैं, 7 into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 5 divided by root 2. ठीक है, सो इसको लिख सकते हैं हम 7 into 10 to the power minus 5 divided by root 2 will be equal to 1.414, तो 1.4, and 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 into 10 to the power minus 5 into 10 divided by 14. 1.4 को लिख सकते हैं 14 by 10, so that 10 will go above because denominator of denominator, and here 2s are and this 5s are, so alpha is equal to 5 into 10 to the power minus 5. This is alpha. Alpha is basically fraction, है ना? Alpha क्या है? Fraction है. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 5 upon 10 to the power 5. If I take 10 to the power 5 molecules, तो उसमें से सिर्फ 5 molecule dissociate होंगे. Now the percentage की बात करें हम, तो percentage dissociation जो होगा, ये आपके पास fraction है. Fraction को percentage में change करने के लिए 5 upon 10 to the power 5 into क्या कर सकते हैं हम? 100. So this will be equal to 5 upon 10 to the power 3 percentage, or we can write 5 into 10 to the power minus 3 percentage. Make sense everyone? Yes or no? Please tell me. तो Yes, समझना है sir. कैसे करना है? ठीक, छापिए प्लीज, कॉपी. Raise your hand once you're done writing. जो भी सवाल हम करा रहे हैं आप लोगों को, प्लीज गो एंड रिपीट इट. ठीक है? बिकॉज क्वेश्चंस, अच्छा आमना, कैसे क्वेश्चंस आए थे इक्विलिब्रियम से? इस तरह के सवाल थे क्या पेपर में? Yes, sir. अच्छा, हो गया था, आपने कर लिया था? Yes, sir. It was little bit difficult, but I did it. So you did it. Okay, that's good then. Yeah.
Is there anyone who is still writing? Anyone who is still writing? No. Right, next question. No, they have given alpha of 0.1 molar bromoacetic acid is 0.132. ठीक है, calculate pH of the solution and pKa of bromoacetic acid. ठीक है, देखिए बहुत आसान है. वी नो दैट अगर आपको अल्फा दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव वी हैव सीन दैट इट इज इक्वल टू व्हाट, C अल्फा. एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, C अल्फा के बराबर. Now the C it is equal to how much? 0.1 multiplied by alpha is 0.132. So this will be equal to 0.0132. This is the concentration of H positive. अब यहां से आपको क्या निकालना है, pH निकालना है ना. So pH will be, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 132 into 10 to the power minus 4. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है. Now pH will be equal to how much? Minus log of the concentration of H positive. This will be equal to minus log of 132 into 10 to the power minus 4, which I can write as minus log of 132 plus log of 10 to the power minus 4. Now minus is as it is, log 132 I will keep it here as it is 132, and इसको क्या सकते हैं, -4 हो जाएगा ये, है ना. -4 will come down, log 10 तो 10 होता है. 132 को I have to just like divide in a few bits. तो tell me, फैक्टराइजेशन करते हैं क्या, 132 2s are how much, 67 नहीं 66, 66 right. 132 divided by 2. हाँ Yes, sir. 2. 2s are 33. So we are getting 33 into 4. इसमें log की वैल्यू आप लोगों को देनी चाहिए ना. क्या करें, हम सीधे निकाल लें. I can तो calculate, I have calculator and everything. 132 log it is equal to 2.212. लिख दें हम सीधा, is equal to 2.212. अब इसमें करना पड़ेगा कि log 4 plus log of 33. अब log of 33 तो हम लोग को नहीं पता होगा, log of 34 कर सकते हैं. 34 will be 17, फिर 17 नहीं पता होगा. It is going to be a bit complicated. ठीक है, इसको निकालो, काफी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. या फिर 34 और 36 का हाफ कर सकते हैं आप. ठीक है, दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, हम सीधा लिख दे रहे हैं. ठीक है, होपफुली आप लोग को लॉग की वैल्यू पता रहे. नहीं पता रहेगा तो आप टीचर से वहां पे पूछ लीजिएगा. दिस विल बी 2.12 minus 4. So this will be equal to how much? 1.88. देखिए जरा, 1.88 में 2.12 ऐड करें तो 2.122. हाँ ठीक है, 4 आ जाएगा. मेक सेंस टिल हियर, यस और नो? ये समझ में आया? Yes, sir. लेकिन दोबारा कर लीजिएगा प्लीज. नाउ नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द के, which will be equal to C alpha square upon 1 minus alpha. अब यहाँ पे ना 1 minus alpha में alpha को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, because you have been given the value of alpha, है ना. alpha और and it is also not like 10
0.00001 नहीं है यहाँ पर, इट इज सम व्हाट वैल्यूज, राइट। अगर आप एक मतलब 10 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें से एक क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है अप्रोक्सीमेटली ना। 100 में आपके पास 13 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जा रहा है। सो इट इज सम क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटीज मतलब वहां पे मतलब बहुत ही छोटी क्वांटिटी नहीं है, इट इज कंपेरेबल। 10 और 1 है ना, कंपेरेबल वैल्यूज हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना दिया हुआ है हम लोग को, 0.1, and alpha we have been given as 0.132 into 0.132 divide by 1 minus alpha, 1 minus 0.132। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, हम तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू 0.0017424 डिवाइड बाय 0.868। ठीक, once you are going to divide these values, आपको approximately जो आंसर मिलेगा that will be equal to 2 into 10 to the power minus 3। This will be the value of Ka that you will get। ठीक है, approximately। और pKa क्या होता है, माइनस log of Ka। so minus log of 2 into 10 to the power minus 3। सो -3 नीचे आएगा, -3 नीचे आएगा तो +3, और log 2 की वैल्यू 3 minus 0.3 आ जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.7। -3 एंड माइनस इज हियर, तो -3 जैसे ही नीचे आएगा इट विल बिकम +3। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, सो दिस माइनस साइन विल मल्टीप्लाई टू 0.3, तो 3 minus 0.3 दैट इज pK 2.7। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। Anyone still writing? Is there anyone who is still writing? No, fine। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जरा लिख लीजिए, छोटा सा है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb of acid base pair। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। लेट अस सपोज वी हैव एन एसिड Ha, it is going to give you H positive plus A negative। ठीक है, now this A negative is what, it is the conjugate base। अब अगर A negative को आप वाटर में डालेंगे, then A negative will attach to the H plus of water, it will form Ha or AH plus OH negative। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ द एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर आपके पास मान लीजिए एसिड है कोई HCN, तो HCN इज द एसिड और CN नेगेटिव उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। सो दैट टाइप ऑफ पेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, एंड उसके Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम देखना चाहते हैं। सो फॉर दिस रिएक्शन आई कैन राइट दैट Ka इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H positive multiplied by the concentration of A negative divided by the concentration of Ha। For this, I can write Kb is equal to the concentration of Ha multiplied by the concentration of OH negative divided by the concentration of A negative only, because OH is, sorry, water is a liquid and pure liquids के हम लोग concentration को नहीं लेते। Now if I write Ka multiplied by Kb,
This will be equal to this concentration multiplied by this concentration, Ka into Kb. Now there are a few things which are common, which can be eliminated. Ha and Ha can be cancelled. A negative and A negative can be cancelled, and we will be remaining with Ka into Kb. That will be equal to the concentration of H positive multiplied by the concentration of OH negative, and concentration of H positive and OH negative is equal to how much? 10 to the power minus 14. So Ka multiplied by Kb will be equal to 10 to the power minus 14. And this implies that if I do pKa plus pKb, this will be equal to 14. But it is of acid base pair. ऐसा नहीं कि acid हम लोग ले रहे हैं HCl और base ले रहे हैं NaOH. It is not valid for these type of acid base. Acid base pair यानी कि conjugate acid base pair का जो relationship होगा K and Kb का, that we have written. Please write this down. मैं Rishita. I'm not done.